welcome. Today we thought we will talk about one of our projects that we are in the process of starting, and that's, I think most of you or some of you have heard about our approach to holistic or complete healthcare using an approach called integrated medicine. So I thought I'll just introduce you quickly to what we mean by integrative medicine and why Venu, an eye institute, a legacy eye hospital, is walking this path. So what we talk, basically integrative medicine is a polypathic approach, and it's blending, it's a holistic and progressive approach that we are taking, and it is integrating eye care with this approach to broaden our scope and reach to our patients and the patient's well-being. So what do we mean by polypathic approach? It's a blending or combining of what we call modern medicine, which is basically allopathy, with traditional medicine, which includes naturopathy, it includes yoga, it includes meditation, it includes acupressure, acupuncture. So we feel that this combination of blending will help us give a wholesome healthcare to our patients and take care of all their needs. Why are we looking at it from an eye hospital's point of view? Because with the emerging lifestyle diseases that we are facing, and I think if I ask in this group only, or if I go anywhere and ask, is anyone in your known circle, anyone in your close circle affected by any lifestyle diseases, which is basically hypertension, diabetes, arthritis, these are things that we all know, and diabetes being one of the biggest culprits, and which is why we in the last couple of months had 2 seminars, one at the Habitat Center and one at the India International Center, basically talking about the havoc that diabetes does create. It affects every organ, and one of the first organ it affects is the eye. Very often we have patients who come for a normal eye checkup, and the doctor will ask, have you checked your blood pressure or diabetes? And they say, no, we don't have. They say, go and check, because eye is the window that tells you what happened inside. So we know that diabetes is a major cause, but we also know that age-related macular degeneration is sometimes linked to our lifestyle, and so is glaucoma, linked to cardiovascular. I'm not going into details of that because that's not the purpose of this talk, but just to tell you why we are getting into it. Because if we as an eye care hospital want to take care of our patients' eye health, mostly eye hospitals only focus on eye health, and for the rest they refer you to your physician. And what is happening is that very often we don't go to a physician because the concept of a family physician is hardly there. So we end up going to a multi-speciality hospital, and then we go to an organ specialist. And that's where we sometimes our patients, especially the senior citizens, get into a jungle which they don't know how to get out of. So we have now, that's why, expanded our scope to add geriatric physician care and then blended with integrative medicine. Because this way we engage with our patients better. We don't leave the patient just after doing a cataract surgery, or just not with only one area of like looking after either ARMD or diabetes, or we get into the entire treatment of the patient. We also know that this will also help us build our reputation with our patients, because then they will know that they can come to us for their general well-being. Only in the case of certain advanced treatment that they may need, suppose diabetes has affected your kidneys or some other organ, then we refer them, we guide them that they need to now go into a super specialty area. And these are the advantages that we look at, that there are very few institutions which are thinking on this line, and we would be happy that we can show a pilot success, so that then this can be replicated by others. And it's a compassionate approach. Venu is known for being a compassionate hospital, so we don't just limit ourselves to one area, but we would like to support our patients in their overall health care. So that's the reason that we have decided that we will be walking this path, and this is why we are having one of our first in the series of Trialogue here, where we will be talking about 3 diseases, and there'll be what allopathy is doing and how that will help you,
how naturopathy helps, and in many areas there's also a role that physiotherapy has. So we have 3 of our specialists who will be talking about all the 3 approaches. I must emphasize that we believe very strongly that allopathy is essential. It definitely is necessary. It definitely helps you in your condition, in your symptoms. But when we want to go to the root cause, naturopathy has a major role, and physiotherapy complements both, in both the branches, whether it's allopathy or naturopathy. So I'd like to invite Dr. Maria. She's going to be talking on the allopathic part. Dr. Anshika Pathak, who's going to talk on naturopathy, and Dr. Abhishek Mishra, who's a physiotherapist. He will add the physiotherapy angle. Good morning all. It's such a pleasure to see you all today. I know we're in a small committee, but I hope the quality of the exchanges we will have you will have more time to ask questions, so that's a good thing. So I would like to introduce my colleagues, Dr. Anshika Pathak and Dr. Abhishek Mishra. And so when we thought about doing a presentation on integrative medicine, we were thinking a little bit about a title, and what we came up with was the best of all worlds. Because this is what we truly believe, as ma'am was saying, that integrative medicine is the way forward. Next slide. So, what are the objectives of this session? We want to bridge perspectives for better health through this trialogue. We want to explore with you integrative care, integrative medicine, and especially for healthy aging, we want to empower you with knowledge, not gyan, but practical knowledge. So for the aches and pains that you may face in your daily life, we will have so we will start our presentation. We will talk about 3 diseases. We chose them because 2 of them are lifestyle diseases, diabetes type 2 and hypertension, and 1 is a degenerative disease, arthritis. So we chose those because maybe some of you may be afflicted by them. So yeah, we wanted to be as relevant and as practical as possible for you. So in terms of diabetes type 2, the allopathic perspective is, I consider it 3-pronged. There's the diagnostic part, there's the treatment part, and it's the management of complications. And that is the main relevance of allopathy in the management of all the diseases we're going to talk about. So, of course, you all know the diagnostic part, fasting blood glucose, HbA1c, and for patients with insulin, continuous blood glucose monitoring. So, the treatments, you may know, you may be taking some of them, metformin, insulin, SGLT2 inhibitors. So these allow to control the blood glucose levels, but as Dr. Anshika will explain, this is not sufficient to prevent complications, because it's not only the blood glucose levels that are affecting the body. So, and finally, we need allopathy when it comes to emergency situations, such as hypoglycemia induced by insulin, or ketoacidosis, which is what happens when you have very high blood sugar. You do need to have an in-hospital treatment, especially in accidents and emergencies department.
So, without further ado, I would like to transfer the mic to Dr. Anshika, so she can speak about naturopathy. Thank you, ma'am. So, diabetes and naturopathy, they both correspond very well together, as diabetes is, you all know, it's a lifestyle disorder, and naturopathy basically functions on the lifestyle. So, we believe that the diseases are caused by the imbalance in the elements. It is caused by the toxicity in your body, and it is caused by the lack of vital energy. The imbalance in the elements are earth and water in case of diabetes, and we try to manage that. If we keep doing the superficial treatment and not the root cause, and we don't see the root cause, then it will be continuous superficial treatment. So what we do is we cater your cause, that is poor diet, lack of physical activity, chronic stress and poor sleep, and toxic accumulation. We do that by different natural treatments without any medications. For example, we manage diet in adding lots of fibers and lots of whole grains and physical activities which cause lack of physical activity which causes insulin resistance. We take care of that. We also work on the stress levels, which is left out by the other systems of medicine. We work on the stress level, ease the mind so that the hormones are better regulated, sleep and circadian rhythm is better regulated, and of course the toxins that we have accumulated throughout the years in our bodies. There is something known as the iceberg phenomena. So this phenomena says that जितना ऊपर से दिखता है उससे बहुत ज़्यादा अंदर है, just like an iceberg. So ऊपर से तो दिख रहा है शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, but what is the cause? Maybe it's you don't have a good sleep and your body is in constant fight mode, that causes elevated blood glucose levels. Maybe it's your diet, you're eating too much of sugars, sugar तो बढ़ेगी ना फिर, but you're not seeing the root cause, you're just seeing sugar बढ़ रही है, and that's the wrong approach. So we see also lack of innervation or vital energy with hydrotherapies, जो कि पानी की थेरेपी होती हैं, जैसे कि हिप बाथ या टब बाथ. उसमें हम पेशेंट को बैठाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोथेरेपी में ऐसे स्पेसिफिक टब्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम नीम फुट बाथ देते हैं, जो सबसे ऊपर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, उसमें नीम का पानी भर के हम हाथ भी डुबाते हैं, पाँव मेजरली डुबाते हैं, जिससे कि बॉडी का जो इम्बैलेंस है एलिमेंट्स का वो इम्प्रूव होता है. इसको हम पल्स डायग्नोसिस के थ्रू चेक भी कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है मड पैक्स एंड फुल बॉडी मड थेरेपी. इससे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी में वो रिलीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू हैव अ गुड स्लीप. एंड वी हैव डिफरेंट थेरेपीज लाइक एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर विच स्पेसिफिकली वर्क्स इन मैनेजिंग दैट वाइटल एनर्जी. जो हमारी प्राण वायु है, जो हमारी अंदर की सोल है, उसको बैलेंस करते हैं. तो एक टिप इसमें ये है कि जो हमारा हाथ है उसका जो फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है, जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है, आप सब देख सकते हैं. ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, इसके जो एंड पे ये पहाड़ सा है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं. दिस इज वेरी या. तो ये जो हाथ दिखाओ तो ये जो हाथ है, इसमें जो थंब है और ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक एलिवेटेड पोर्शन बनता है. यू प्रेस दिस पॉइंट इन विद अ लूज हैंड, सो यू प्रेस इट एंड you'll find a tender point inside. That is the master point or Hegu. It's known as Hegu. तो ये master point बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि अगर आपको headache है, you can use it in that also. If you have irritation and trouble while you're working, you can use this point. And diabetes, of course, it helps. तो ये क्या करता है, बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा के रेगुलेट कर देता है. और मैंने आगे इसमें लिखा है कि हम और क्या क्या कर रहे हैं. क्यों नेचुरोपैथी, क्यों नेचुरोपैथी? क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है. मतलब यू वन टाइम यू लर्न इट एंड यू प्रैक्टिस इट एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग इट. यू लर्न हाउ टू वेक अप अर्ली, यू लर्न हाउ टू स्लीप अर्ली, you learn how to take hydrotherapies, and you bring it in your lifestyle, and that is why it is very sustainable treatment. So some tips for diabetes are being very smart with your diet. So I've used a mnemonic known as SMART.
which is slow digesting carbs. We don't take fast digestive carbs like मैदा जो एकदम से sudden peaks लाता है sugar में. Like we use millets which are slow digesting carbs. Okay, we use moderate portions. We don't eat too much at once. We eat less but balanced. We also avoid sugary and processed, of course. We also take food which is rich in fiber, क्योंकि फाइबर क्या करता है ना, डाइजेशन को स्लगिश कर देता है और एकदम से शुगर की पीक्स नहीं आती. और यही हम डायबिटीज़ में चाहते हैं ना कि हमारी एकदम से 300 शुगर ना आ जाए. सो यू डोंट गेट immediate high blood sugars, right? And we take timely meals. Why? Because जब हम मील टाइम पे लेते हैं तो हमारा बॉडी का एक रिदम सेट हो जाता है. ओके 1 o'clock आई हैव टू डाइजेस्ट द मील. और अगर हम अपना टाइम सेट नहीं करते ना तो बॉडी इज लाइक 12 o'clock already and you're already having a meal. Oh, the body feels irritated and that causes irritation. And we are saying, I'm feeling irritated without a reason. There is a reason for everything. In naturopathy, we believe everything happens with a reason, but it's our inability to understand it. Fenugreek, जिस पर बहुत सारी researches भी हुई हैं, fenugreek is the best thing to consume with diabetes. I think इसको हम बहुत तरीके से ले सकते हैं, जैसे मेथी की सब्जी, फेनुग्रीक वेजिटेबल, और सोकिंग फेनुग्रीक सीड्स इन द मॉर्निंग, इन द नाइट एंड देन टेकिंग इन द मॉर्निंग. इट्स वेरी गुड. इट रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर थ्रू आउट द डे. Also, because it has a lot of soluble fibers and it has a special compound known as 4-hydroxyisoleucine, which mimics the insulin. So it helps in regulating your blood sugar. Well, we'll discuss maybe next time. I would now hand over to Dr. Abhishek. थैंक यू मैम. फिजियोथेरेपी अब इसमें क्या रोल पैदा करेगी? एक तो पहली चीज़, फिजियोथेरेपी ये फर्स्ट टाइम है कि नेचुरोपैथी के साथ इंट्रोड्यूस की जा रही है डायरेक्टली. नहीं तो अभी तक इससे पहले कहीं इतना यूजुअली हुआ नहीं है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले फिजियोथेरेपी की बात करूँगा. इनएक्टिविटी है सबसे बड़ा मेन रोल, कि हमारी मतलब इनएक्टिव हो गए हैं, घर पे बैठे हैं, उसकी वजह से हमें दिक्कतें बढ़ रही हैं. तो हम क्या करेंगे? पहली चीज़ मैं इन्हेंस करूँगा इस चीज़ को लेके कि मतलब आप वॉक पे ध्यान दें, आप अपने पॉस्चर पे ध्यान दें और आप अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दें. कुछ ना कुछ चीज़ों में इंडल्ज रहिए, वर्क करिए. ठीक है. दूसरा, योगा यहाँ पर क्या करेगा? आपके जो स्ट्रेस लेवल है उनको मेंटेन करेगा. आपका जो बैठने का तरीका है उसको ठीक करेगा. योगा क्या है? एक तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पश्चिमोत्तासन और धनुरासन को मैंने बताया हुआ है. तो इसमें पश्चिमोत्तासन पे हमारी जो बैक मसल्स हैं उसका स्ट्रेच आ रहा है. पैरों के पीछे की तरफ को यहाँ पर हैमस्ट्रिंग होती हैं और नीचे काफ होती है, उस पर स्ट्रेच आ रहा है. और साथ ही साथ हमारे एब्डोमेन पे भी प्रेशर पड़ रहा है, जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में. और एक जगह पर बैठ के हम कई सारी चीज़ें घर पर बैठ के कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ें हैं. दूसरी धनुरासन, ये एक इसमें एक प्रिकॉशन है. कुछ लोगों को क्या होता है कि खड़े होके बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बैठे बैठे कई सारा पेन होने लगता है. ये उनके लिए नहीं है. हाँ, जिनको छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बैक पेन हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग नहीं है, उनको हम धनुरासन के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी बैक मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है. साथ ही साथ जो हमारी एब्डोमेन की मसल है या चेस्ट मसल है, क्योंकि हाथ पीछे ले जा रहे हैं, तो चेस्ट मसल और एब्डोमेन की इसकी स्ट्रेचिंग हो रही है. तो ये दोनों चीज़ कंबाइनली तरीके से हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए. और अगर ये कंटिन्यूसली करते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारी बॉडी एक तरीके से एक्टिवली बहुत जल्दी काम कर सकते हैं. हमें मतलब आलस नहीं आता है इन दोनों आसन को कंटिन्यूसली करते हैं. एक चीज़ और, ये दोनों आसन करने से पहले हमें थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए. अराउंड 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हाँ थोड़े 15 मिनट का मेडिटेशन, देन ये 2 आसन कर लेंगे तो हम काफ़ी एक्टिव रहेंगे. So now we're going to talk about hypertension. So in allopathy, the diagnosis of course is very straightforward. But we need diagnostic methods to screen for complications such as congestive heart failure through an EKG or through an echocardiogram, a sonogram of the heart. The treatment, I think you all are familiar with it, beta blockers, diuretics, ACA inhibitors, etc., etc. And likewise, we need a certain management in allopathy, through allopathy, for the complications, the major complications of hypertension,
The very acute complications are strokes, mainly hemorrhagic strokes, and acute manifestations of congestive heart failure. So there we need either a neurologist or a cardiologist, and usually these patients need to be handled in the ICU. But of course, before we arrive to these extremes, we want to present the naturopathic perspective in order to handle the disease and prevent all of these complications. Yes, so hypertension, this comes with age mainly, and एज जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है. छोटे बच्चों को तो स्ट्रेस नहीं होता है, बड़े बच्चों को ही होता है. So we mainly work on the stress aspect of it, and of course toxic accumulation is the same, and also we reduce salt in your diet. That is the thing that most people are not willing to, but it's very important. We also deal with things like hardening of arteries and atherosclerosis. उसमें क्या होता है ना, ये जो नलियाँ होती हैं इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है. That is what we say is toxic matter, and we have ways to take this out of the body with our specific diet regimes and the naturopathy treatments. So this is a machine known as a sitting spinal spray that we have at our center, at Venu Naturopathy Center, and इस पे क्या होता है ना, बैक पे कोल्ड वाटर का बौछार आता है. It sprays your spine. So it works on the PNS. There is two systems, sympathetic and parasympathetic. तो ये क्या करता है ना, parasympathetic system जो है इस पे काम करता है, क्योंकि स्पाइन पे प्रहार कर रहा है. स्पाइन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से डील करती है, और जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना. तो ये इनडायरेक्टली ऐसे काम करता है. We also do cold and hot foot immersions. Hot foot immersion और cold foot immersions में क्या होता है, we see कि टेक्निक क्या है. अभी अगर immediately blood pressure rise हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम cold foot immersion देते हैं, cold foot bath देते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था. क्या होता है कि एकदम से ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चला जाता है, ब्लड जो सर्कुलेशन है एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चला जाता है, हाथ पैर लाल हो जाते हैं, हार्ट फील्स एट रेस्ट. सिमिलरली हॉट फुट बाथ हम पेशेंट्स को डेली लेने के लिए रिकमेंड करते हैं रात को सोने से पहले. क्यों? वाई बिफोर स्लीप? बिकॉज इट इंड्यूसेस वेरी गुड स्लीप. You soak your feet in hot water and you feel relaxed and you feel at ease and you sleep well. And when you sleep well, you are less tensed. Also, ये भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करेगा. पानी, गर्म पैर में पानी डालेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जाएगा एंड यू फील एट ईज. कंटिन्यूसली कुछ महीने तक करते हैं तो ब्लड नेचुरल जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे दिखता है. ऐसा हमने कई पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है. मड थेरेपी अगेन वी गिव ऑन द एब्डोमेन एंड आई बिकॉज इट कूल्स डाउन योर सिस्टम एंड मेंटेन्स अ कूल टेम्परेचर. क्या होता है ना, दो एनर्जीज है बॉडी में, एक सूर्य एनर्जी है और एक चंद्र एनर्जी है. चाइनीज़ में बोलते हैं यिन एंड यांग. तो जब यांग बढ़ जाता है ना तो बॉडी में हीट बढ़ती है. बॉडी में हीट बढ़ती है तो वो रिलेटेड है नेचुरोपैथी या चाइनीज़ मेडिसिन में उसको बोलते हैं यांग बढ़ गया है, और उसको ठीक करने के लिए हम यिन को बढ़ाते हैं या यांग को कम करते हैं, यानी कि कूल वाली चीज़ को हम बढ़ा देते हैं. इसलिए हम सारे ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स कोल्ड देते हैं इसमें, जैसे मड, ठंडी मिट्टी या ठंडा स्पाइनल स्प्रे या ठंडा पैर का स्नान. और एक्यूपंक्चर से भी इसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं. हम स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं जो यिन एनर्जी को एग्रीवेट कर देता है, बढ़ा देता है. एक्यूप्रेशर थेरेपी ये है, इसमें एक टिप है लिवर 3. ये एक पॉइंट होता है जो पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में है. यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया. अब डॉक्टर अभिषेक के जूते नहीं निकलवाएंगे ना तो पहली अंगूठा और दूसरी उंगली, इसके बीच में आप देख सकते हैं ऊपर रेड कलर का पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर. ये पॉइंट प्रेस करने से आप 5 मिनट्स इसको सर्कुलर मोशन में प्रेस करेंगे तो बहुत easily you take your deep breaths and keep pressing this point and your blood pressure's dropping. So you can do it with a BP meter attached to your arm as well, and you can do the practical. ये घर पे सब करके देख सकते हैं. You take care कि you have a measuring blood cuff on your arm, okay?
अगली चीज़ है फुल बॉडी मसाजेस। ये मसाजेस आपको ईज तो करती है, बॉडी की स्टिफनेस को तो निकालती है और रिलैक्स भी करती है, बट अगर इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करें हम, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये बहुत अच्छा काम करती है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। शिरोधारा जो थेरेपी है उसमें आप लोग कितने लोग जानते हैं शिरोधारा? गुड। तो शिरोधारा में क्या होता है ना, एक पानी या तेल का या छाछ का धारा बहता है माथे पे, ऑन योर फोरहेड, and it makes you feel so good, so happy, and it releases your stress. It's also good for hair fall, by the way. So it has a lot of benefits, and ये थेरेपी स्पेसिफिकली हम हाइपरटेंशन में देते हैं छाछ के साथ। छाछ इज बटर मिल्क बिकॉज ऑल्सो इट्स कूल इन नेचर, ठीक है ना। द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज अबाउट इड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। इड़ा इज द चंद्र नाड़ी एंड पिंगला इज द सूर्य नाड़ी। ये कहाँ होती है नाड़ियाँ? ये नाड़ियाँ हमारी बॉडी में होती हैं, बट इसका रेगुलेशन हम नोज से कर सकते हैं। सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट मोर। डाइट में वी प्रेफर एशगार्ड बिकॉज ऑफ इट्स गुड सॉल्युबल फाइबर्स एंड बॉटल गार्ड। एशगार्ड नहीं मिले तो बॉटल गार्ड चलेगा, लौकी चलेगी, नहीं तो जहाँ जिसका पेठा बनता है ये वही एशगार्ड है। दूसरा है फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमी सीड्स बिकॉज इट्स रिच इन ओमेगा 3, इट वर्क्स वंडरफुल। वो जो कचरा दिखाया था ना नलियों में जमा हुआ, इट्स वर्क्स वेरी नाइसली फॉर इट। अदर थिंग इज अर्जुन एंड सिनेमन। अर्जुन इज अ ट्री जिसकी छाल, बार्क, वी यूज इट to prepare some decoctions or medicated water, and cinnamon is dalchini that we add in our Indian food. They both work very well together, and इसको डेली हम अगर पेशेंट को देते हैं फॉर अ वीक और 15 days, it really helps them, and there is no sudden peaks of blood pressures. Garlic, it is also a natural vasodilator because of its compound that has allicin. It has allicin compound जो एक बीपी की दवाई की तरह काम करते हैं. We recommend our patients to take garlic 5 cloves in the morning as soon as they wake up, and it works very well. Also things like jowar and bajra, which is also rich in fiber. Fiber is very much required in all the lifestyle disorders, and we tend to not add it in our diet regularly. So बिकॉज फाइबर क्या करता है ना, ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, बीपी को भी रेगुलेट करता है, बॉडी के अंदर का पानी भी रेगुलेट करता है. इट्स वेरी गुड फॉर यू. फूड्स टू अवॉइड दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, बट स्टिल डू इट. जस्ट डोंट टेक एक्सेस सॉल्ट, डोंट टेक रिफाइंड फूड्स जो बिल्कुल ही रिफाइंड होते हैं जैसे मैदा, और कैफीन और अल्कोहल को लिमिट करना बहुत आवश्यक है व्हेन यू आर हैविंग हाई हाइपरटेंशन. डॉक्टर अभिषेक. We should sit together and limit it. ओके. फिजियोथेरेपी हाइपरटेंशन में क्या हेल्प करेगी? फिजियोथेरेपी में क्या है कि हाइपरटेंशन में मेन रोल क्या है, जैसे कि अभी मैम ने बताया था, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है. हमारी जो वेन्स या आर्टरी हैं उनके ना ल्यूमन के बीच में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, मोस्टली फैट होता है. ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे उस जगह पर. कैसे? टारगेट बेस्ड एक्सरसाइज करा के. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने एरोबिक एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया है. एरोबिक एक्सरसाइज एक तरह की कंटिन्यूस एक्टिविटी है. कंटिन्यूस एक्टिविटी के लिए एग्जांपल रख सकते हैं डांस. फिजियोथेरेपी में एक चीज़ होती है ताई ची, उसमें कंटिन्यूस स्लो मूवमेंट कराया जाता है बॉडी के पार्ट्स का. ठीक है, जिसमें नॉर्मली मूवमेंट होते हैं. आपने शायद कराटे मूवीज़ वगैरह में कहीं देखा होगा, जिसमें हल्के हल्के मूवमेंट करते हुए आपको लोग दिख रहे होंगे ध्यान करते हुए. ठीक है. अब दूसरी चीज़, जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नाड़ी का कंट्रोल करना है, तो हमारी 2 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी. राइट नोस्ट्रिल्स और लेफ्ट नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंगली ये चलती हैं. इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स हैं. किस तरीके से इसको करेंगे? रेचक, पूरक, कुंभक. मतलब इनहेल, एक्सहेल और होल्ड. ब्रेथ को किस तरीके से इनहेल करना है, कितनी देर होल्ड करना है और कितनी देर पे उसको छोड़ना है, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है मेडिटेशन के टाइम पे. कभी भी आपने किसी भी मेडिटेटर को देखा होगा जो हेल्प कर रहा हो या टीच कर रहा होगा, वो ये बताता है अपनी सांस की तरफ ध्यान दीजिए, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, फोकस करिए. मेडिटेशन आप तभी कर पाएंगे. तो आप जब तक अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप कर ही नहीं सकते मेडिटेशन, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो आपके थॉट्स चलते रहेंगे.
तो जितनी स्लो ब्रेथ होगी, जितनी देर उसको आप होल्ड करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होता है। इसमें हम लोग क्या कराते हैं हाइपरटेंशन में कि हम शवासन कराएंगे। शवासन क्या है? बहुत सिंपल है, बेड के ऊपर हाथ ऐसे खोल के बस लेट जाओ, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, हमें हाथ का यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली धीरे धीरे बस इनहेल करिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब आप इनहेल करेंगे, ये इनहेल किया, कुछ 2 सेकंड रोका और धीरे छोड़ दिया, तो जब हमने ऊपर रोका था ना, ये बोला जाता है रेचा का पूरक मतलब इनहेल करना, ठीक है, और छोड़ना। तो इस तरीके के 3 स्टेप्स हैं जिस तरीके से ये किया जाता है। स्लाइड आप ठीक है, एक आदमी लेटा हुआ है, यही करना है हमको बेड पे लेट के, ठीक है। ये है शवासन। ऊपर जो मैं बता रहा हूँ चंद्रनाड़ी, इसमें चंद्रभेड़ी प्राणायाम किया जाता है। इनडायरेक्टली वे में हमें अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को से ही इनहेल करना है, उसी से ही छोड़ना है। जब इनहेल करेंगे तो इनहेल करने के बाद ऊपर 5 सेकंड पे होल्ड करेंगे, होल्ड करते साथ ही फिर धीरे से छोड़ते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा देर तक सांस को लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। सब लोग अपनी फिंगर एक नोज के नीचे रख के एक्सहेल करें एंड सी विच वन इज वर्किंग मोर, लेफ्ट और राइट। जिसकी राइट वर्क कर रही है इट मीन्स देयर इज सम एजिटेशन और टेंशन। जिसकी लेफ्ट वर्क कर रही है इट मीन्स वो बहुत चिल्ड आउट है। इट्स रियली लाइक दैट। Yes, because you feel at ease, right? But when there's something stressful happening, your always right one will work more. Or if you're fighting with someone, your right one will always work. तो अगर कभी खुद को दोनों चल रही है तो you are God, you are Lord Shiva. It's a very good thing अगर दोनों एक sync rhythm में चल रही है, although it happens very less and it's always one working more. कुछ टाइम के लिए दिन में हाँ, ऐसा योगा में कहा जाता है कि जबान पे सरस्वती आ जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। That's the time when your both the nadis work together for just a few seconds, and then what you manifest at that time always happens. It's said, although it's not been researched upon, but it's said in the Samhitas and Vedas as well. तो इसको अगर किसी की राइट नाड़ी चल रही हो ना, उसको गुस्सा आ रहा हो, उसकी फाइट हो रही हो, एंड यू वांट टू काम दैट पर्सन डाउन और यू वांट टू काम योरसेल्फ डाउन, टेक योर राइट हैंड एंड पुट इट इन योर लेफ्ट आर्मपिट, breathe 3 times and it will shift. So it's a tip. Okay, that was out of the topic. Now let's come back. Does it work in reverse also? Yes, if for example if I have a presentation today and I'm like, I cannot give the presentation, right? So I'll have to make my right nostril work a bit more. So I'll just close my left one, breathe through right, or put my arm in the right arm. That's a secret trick that most people use and we don't know that, but I know, and I'm sharing it with all of you. Huh? Okay. Yes, ma'am. वो नहीं, वो दूसरा हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट। Yeah, we'll take questions a bit later. So finally, we'd like to talk about arthritis. So as I was saying earlier, it's a degenerative disease. In terms of diagnosis, it's important sometimes to take an X-ray or an MRI to see the extent of the lesions, and to take some blood tests, in particular to screen for any autoimmune type of arthritis. The management through medications is mainly pain medications, or in the case of autoimmune diseases like immunoglobulins, etc., etc. However, these medications have often adverse effects. NSAIDs, for example, can have complications at a gastric level or for your kidneys. So taken for a very long time, and given that it's a chronic disease, it comes with some complications also. And
Well, for the complications and the degeneration of the joints, there are some options in terms of joint protection. And when the complications are too advanced, unfortunately for some people, it's indicated that they undergo surgery. So in order, when we hear surgery, we're like, oh la la. So now let's see how we can continue preventing the complications. Yes, so arthritis में क्या है ना, air element imbalanced रहता है. The air element is imbalanced. That is the वात in आयुर्वेद. जब air element बढ़ता है, जब air element बढ़ता है तो कहीं पे भी air element बढ़ेगा ना, wherever the air element is high, you'll feel pain. For example, अगर air element head में बढ़ गया तो headache होता है. Air element पेट में gas होता है तो stomach ache होता है. So naturopathy believes wherever there is pain, there is an excess of air element. तो जब air element joints में आ जाता है, it gets trapped in your joints. It causes pain in joints. Also inflammations and lots of other things. And it happens because of the toxin that's already accumulated in the joints. So first of all, we detox the body through certain things like enemas and maybe mud therapies and changing your diet and reducing your inflammation through lots of therapies, and then we work on the constructive therapies. So these are the some of the therapies that we give. Some are like a mustard pack. Mustard is warm in nature and it is also mustard. सरसों तो तेल है ना उसमें. It has a lot of oil in it. So wherever there is excess of air element, we give oil. जैसे सिर में दर्द होता है तो चंपी करते हैं ना, it's an age old thing ना. Similarly, because air element is high, so we put oil wherever it is. If your stomach is daily producing daily having gastric problem, have some good oil or ghee in your diet and you'll resolve it. Similarly, we give oil compresses. वो कैसे देते हैं? We put oil on your joints or wherever it's painful, maybe on the knees or arms or even on the minor joints. And we then cover it with a wrap or maybe a banana leaf or a cling wrap, and we then put it in hot fermentation. उसको गरम करते हैं हम, गरम बॉटल रख के या गरम टॉवल्स रख के, and it certainly helps. इससे क्या होता है, वहाँ पे blood circulation भी बढ़ता है, वहाँ का air element dissolve होता है और relief मिलता है patient को. We also certainly recommend for arthritis patient to have a good sun bath early morning. It's very, very essential. Sun or the fire element is very essential. We also give chromotherapy. Chromo means color and therapy means chikitsa, treatment. So the color therapy is, we particularly recommend red color, लाल रंग. लाल रंग क्या करता है ना, Have you ever seen oil relieving, जो pain relieving oil की bottles होती हैं या balms की bottle होती हैं, it's always red in color. Red has innate property of relieving the pain from the joints. So we also prepare specific waters and oils, keeping it in red color bottles and prescribing it to our patients. Also घर पे भी जो आप bottle से पानी पी रहे हैं, glass की bottle है, prefer it to be red if you are suffering with arthritis specifically. Also we प्रिपेयर पोटली. ये पोटली देख रहे हैं आप, इसमें हम कई चीज़ें डालते हैं, जैसे कि बहुत वात शामक पत्ते, स्पेसिफिकली लीव्स दैट रिड्यूसेस द एयर एलिमेंट, एंड वी मेक इट विद दैट. वी एड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक एंड मस्टर्ड एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, एंड वी मेक अ पोटली आउट ऑफ इट. वी डिप इट इन ऑयल एंड डू द मसाज ट्रीटमेंट विद इट. वी ऑल्सो make this potli with sand, balu, रेत. Why? Because in some conditions we cannot put oil. That we have to check with the help of an allopathic doctor, whether it's an autoimmune disease or whether it's an osteoarthritis or whether it is a rheumatoid arthritis. Because if it's a rheumatoid arthritis and if we give oil treatment, then it's going to hamper and it's going to worsen the pain. So it's very important. So we take into consideration everything and then prescribe the treatments. Food. तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बाजरा और रागी. बाजरा इज वार्म इन नेचर एंड रागी इज रिच इन कैल्शियम. दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर आर्थराइटिस. तो आर्थराइटिस में रागी बाजरा की रोटी, रागी बाजरा के लड्डू, रागी बाजरा की सैलड, रागी बाजरा की खिचड़ी, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी गुड फॉर द
joints and joint pains. Also, ginger and turmeric, we can make a decoction out of it or add it more in your regular meals. And black sesame seeds, काले तिल या फिर सफ़ेद तिल भी, दोनों ही बहुत रिच होते हैं कैल्शियम में. काले तिल ज़्यादा हमने अच्छा रिजल्ट देखा है उसका, तो मैंने यहाँ मेंशन करा है. ये आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को इम्प्रूव करते हैं. So it's very good to add and make laddus with kale til and gur, and you can have it if you are not diabetic. Otherwise you can just have kala til powder, black sesame seed powder, just grind it and maybe add it in your salads or in your chapati ka atta, and it helps. The food that you should avoid is the food that is cold in nature. For example, curd or white rice. These things are cold in nature. And also specific vegetables, nightshades vegetable बोलते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली से होती हैं, जैसे टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल या बेल पेपर्स. ये हमेशा जॉइंट पेन को बढ़ा देती है, ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है, जहाँ पे दर्द होता है उसको और सूजन कर देती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दिस. ऑलवेज आई वुड रिकमेंड पेशेंट्स विद आर्थराइटिस टू टेक warm herbal teas throughout the day. Keep sipping it. It always helps. Also steamed या lightly cooked vegetable. Raw vegetable नहीं खाना है. Salads नहीं खाना है arthritis में. It's good for diabetes and hypertension, but it's not good for arthritis due to the air element. जो salad है वो it's light. It has a lot of air element in it. If you want to eat salad, steam it and then eat. It's always good when it's cooked. Dr. Abhishek. आर्थराइटिस ये कोई छोटी ब्रांच नहीं है, इसमें कई सारे टाइप्स के आर्थराइटिस आते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली आजकल बढ़ रहा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. इसमें क्या है, बैम्बू स्पाइन होने लगती है. जो कर्वेचर है स्पाइन का वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो पूरा सी शेप में आ जाएगा, जबकि स्पाइन को एस शेप में होना चाहिए, जैसा कि हमने सुना है. बल्कि इन एलोपैथी एंड फिजियोथेरेपी इसका शेप कुछ अलग होता है. सी शेप यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद थोरेसिक पे अलग हो जाता है, लंबर पे फिर अलग हो जाता है. मतलब कुछ ऐसे, फिर नीचे, इस तरीके से. कुछ ये सी बनाया, फिर नीचे सी बना, फिर ये नीचे बना. इस तरीके से हमारी स्पाइन होती है. तो जब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ये एक टाइप का आर्थराइटिस भी है, तो ये पूरा ही सी हो जाएगा. पेशेंट ना तो चल पाएगा, ना कुछ फर्क पाएगा. लोग के ऊपर निकल आता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं लोग. तो ये वो चीज़ है. ठीक. दूसरा रेमेटॉइड आर्थराइटिस. ये एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, हमारी उंगलियों के पास से स्टार्ट होता है. हम लोग ना उंगली चटकाते रहते होंगे कई बार, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए. ये उसको ना एक तरीके से इनहिबिट करता है, बढ़ाता है इस टाइप की चीज़ों के लिए. ठीक है. हमारा यूरिक एसिड लेवल कैसा है, नॉर्मल लेवल पे टेस्ट कराना इसीलिए ज़रूरी होता है. 15 डेज में हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, तो वो भी चीज़ है. ठीक. नॉर्मल आर्थराइटिस जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जैसे मैं हमने बताया था, तो ये दो तरीके से होता है. या तो कोई आपके चोट लग गई हो, या फिर आपकी एज आजकल के टाइम के हिसाब से 35 प्लस होते ही साथ आपको ये स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि वर्किंग कल्चर ही हमारा ऐसा है कि या तो हम स्टैंडिंग पे ही हैं तो स्टैंडिंग पे ही हैं, या तो हम बैठे हैं तो हम बैठे ही हैं. ठीक है. तो एक्टिविटी ज़रूरी है पहली चीज़. ठीक है. दूसरी चीज़, अब हम इन सारी चीज़ों से बचेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे. पेन रिलीविंग एक्सरसाइज क्या है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. फॉर एग्जांपल मैं नी की ही अगर अभी बात करूं, तो नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी. पैर के ऊपर ऐसे मतलब पैर उठाया हमने, चेयर पे बैठ गए, होल्ड किया, छोड़ दिया. तो यहाँ पर क्या है कि क्वाड्स मसल है हमारे फ्रंट साइड पे. मैं सामने आता हूँ. ठीक है. ये क्वाड्स मसल है हमारी. ठीक है. यहाँ पर 4 मसल होती हैं. ठीक है. एक मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो बहुत अजीब अजीब से नाम है. ठीक है. तो ये 4 मसल है, इसको हमें ट्रेन करना है. एक सेंटर में, एक साइड में और एक इधर, एक उनके ऊपर एस बनाते हुए नीचे जाती है. ठीक है. इसको ट्रेन करने के लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई हमें किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है. बट हमारे अगर वर्टाइगो वाला इशू है तो हमें वॉल का हेल्प की ज़रूरत होगी, अदरवाइज हम ऐसे कर सकते हैं. एक सिंपल तरीका क्या है, बैकवर्ड वॉकिंग. जितना हम बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे क्वाड्स हमारी टाइट होगी. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल सामने वॉक करके चले गए तो क्या होगी, हमारी हैम्स टाइट होती है, हैमस्ट्रिंग होती है टाइट. उसमें भी कई सारी मसल हैं, उसके ऊपर फोकस होता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन और बढ़ने लगता है. कि हमें ये बोला गया कि भैया वॉक करो सही हो जाओगे, हम तो चलने गए थे, हमारे कमर दर्द होने लगा. क्यों, हमने इस तरीके से मतलब किसी के गाइडेंस नहीं लिया और वॉक कैसे करना था वो ध्यान नहीं दिया. ठीक. दूसरी चीज़, सेतु बंद आसन, ब्रिजिंग. ये आपको किसी भी डॉक्टर ने बताई होगी जब बैक पेन होता है.
ठीक है ना। ये एक बहुत कॉमन है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर किसी को पेन है, शियाटिका पेन है, तो तब इसको नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइन बिल्कुल सीधी हो गई होती है, उसको हम हिट कर रहे होंगे। तब उस चीज़ में क्या हेल्प करेगा? हमारा जो बलासना है, ठीक है, इसमें हम नीचे जाएंगे, बेड के ऊपर पैर मोड़ के बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गया, ये बैठा और नीचे जाने लगा, तो ये स्पाइन खुलने लगती है, लॉक नहीं होती है, वो खुलने लगती है, ठीक है। ये हेल्प करती है। जैसे कि इसमें बैकवर्ड वॉकिंग दिखाई है, ठीक है, जो शाहरुख खान की स्टाइल में वो खड़ा हुआ है ठीक है। तो ये प्रॉपरली देखिए आप, अगर आप देखना चाहेंगे, जब मैं बैक आ रहा हूँ तो मेरी स्पाइन भी आगे जा रही है, ये स्ट्रेटनिंग हो रही थी ना, वो चीज़ आगे गई और मैं पीछे आया, तो यहाँ लोड आता है सामने फ्रंट की साइड की, ठीक है। So this concludes our presentation. Before we pass on to the Q&A, we would like to thank you so much. I hope it wasn't too long. We are very passionate about integrative medicine. So really what we do at the Naturopathy Center is all about holistic healing. So please, after the lunch, do come and visit us. Do come, bring your family and friends. As you can see, we have passionate professionals. So yes, I'm going to open the floor and hand over the mic for Q&As. Meenakshi ji. Just one clarity. There's so much talk about air element. What is air element? So our body is made up of 5 elements, like I explained here. ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। जब ये 5 बैलेंस में रहते हैं तो आवर हेल्थ इज इन बैलेंस, आवर माइंड इज इन बैलेंस। जब इसमें से एक भी एलिमेंट एग्रीवेट हो जाता है, एयर एलिमेंट कैसे बढ़ता है? जैसे हमने एक बाउल में खाना रखा, मे बी खिचड़ी, एंड देन वी कवर इट विद अ क्लिंग रैप, वो फूल जाता है ना, फर्मेंट हो जाता है, वो सड़ जाता है। सिमिलरली हैपन्स इन आवर इंटेस्टाइन्स। जब बॉडी अच्छे से क्लीन नहीं होती है ना, हमारा गट अच्छे से क्लीन नहीं होता, हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, वो फर्मेंटेशन ब्लड में स्टार्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है, वो फिर वो एयर ट्रैवल करने लगता है बॉडी में थ्रू द ब्लड, एंड देन इट can go anywhere in the body. How does it get to a joint? It's through the blood. Through the blood, it travels. It's mentioned in all the ancient texts. And जब भी हम ऑयल लगाते हैं तो वो एयर एलिमेंट वहाँ से मूव करके and it gets out of the body. Okay? So ऐसे ही अगर अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है तो हम वेट गेन करते हैं, फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, या फिर चेहरा लाल रहता है. So that's how we diagnose in naturopathy. It can be also measured through the pulse. कौन सा एलिमेंट बढ़ा है? Okay? How you can see with the pulse? We can see it. We have learned it through with the 10 years of continue learning. We can check with the different points and with the experience that we have learned from our seniors. Because in Ayurveda also they say Yes. all are balanced. Yes, in Ayurveda also they can measure through the pulse. We do the Ayurveda analysis as well, but we do a different one, the Chinese analysis, in which there's 3 types of pulse: the superficial, the deep, and the in-depth pulse. It's very complicated in like Ideal pulse rate. pulse rate. Ideal pulse rate. Yeah, it's. I think ma'am can answer that. Ideal pulse rate. 70 to The ideal pulse rate is between 60 and 90 beats per minute. So if it's under 50, you may have syncope or, lose consciousness. And if it's above 100, 110, especially if you have, for example, arrhythmias or any other heart conditions, it's important. Like, of course, if you're running a marathon, it's normal. But if you're resting 110 above, it's to be considered. That's why we have integrative things. Allopathy is required as well. Naturopathy is also required, and physiotherapy works at a different. It is a different scope of viewing. So that's why it's very good to integrate these things. No? Thank you very much for a very absorbing presentation. My question is personal.
How do I reduce the sugar craving? Because I eat a lot of. So, so many people are. Yeah, sweet tooth actually, and you can't avoid. Though normally I eat healthy, but when it comes to having dessert, I cannot stop. So how does one? What's the reason? Yeah, sure. It's like our mind's OCD. जैसे कि किसी को साड़ियाँ इकट्ठी करने का शौक होता है ना, तो वो साड़ी इकट्ठी करता रहता है, वो कहता है ही नहीं. Similarly is our mind. Our mind has a lot of sugar in the body already, but it's unable to recognize, maybe due to the lack of insulin, which is known as insulin resistance. It's always good to exercise. If you have a lot of craving, just go for a walk. कि मैं 10 मिनट बाद आके खाती हूँ. Go for a walk, and then your body will be like, अरे हाँ साड़ी है तो, अरे sugar है तो, I'll just use that one. Also, sometimes there is deficiency of potassium and magnesium that you should check. So if you're having a lot of sugar only cravings, then you can consume a lot of coconut water for maybe a day or two, and then you will feel a sudden reduction in the cravings. It's very important to check potassium levels. Thank you very much. And the second is, do you have a particular time for this integrative naturopathy center? So, our center is open every day, Monday to Saturday from 8:30 to 5. But in order to accommodate working or busy patients, we may extend hours from 6:37 to 8:30 p.m. So please don't hesitate, don't be shy. We know that seniors are very busy people. We think that once you retire, you relax. No. A lot of things to do. Catch up. So we can accommodate you. We have our brochures at the entrance where you paid, and there is our contact number. So please don't hesitate to ask for your appointment, and we can accommodate you anytime. Thank you very much. I have a question about feel good packages, because I've known friends to go off to Kerala and other such places and just have a 3-day, 4-day package kind of a thing. Not that they have any of these diseases, just a normal situation. Yes, so does this naturopathy center have any, Yes. the holistic healing center have such a facility of in-house stay, or come in the morning, go back in the evening, but come back for regular 3 Yes. days, 4 days, something We do like have packages like that, and I believe naturopathy is for everyone. Other pathies might be for people who are sick, but we have naturopathy for everyone. It's good to always balance your elements and calm your system down. जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना, बाइक की सर्विस कराते हैं, similarly you have to service your body in order to go for long, healthier, है ना? So we have packages like that. It is very much customizable, and it's when you discuss with the doctor, we can help you in everything, with the timings, with the OPD hours, with the staying, everything. Thank you for your beautiful presentation, all three of you. One question I want to ask is, this holistic healing, that is a combination of the allopathy medicine along with the naturopathy thing, is it only for the body or for the mind also? I'm talking about specific disease like depression. Does it help in that? Yes, naturopathy views body as a whole. There's no different sections or departments like head and neck and different bodies. It's a whole. Our mind is the main center. That's why I've already explained, like we mainly work on the mind aspect, like giving Shirodharas, a spinal spray, working on the nervous system. We particularly target that area first, and then we come to the rest of the body. It's very important. So for depression, I think naturopathy works wonderfully, because there's yoga, which is already, everyone knows, there's a lot of benefits of yoga for these types of patients. And when your elements are at ease, when your 5 elements are balanced, you feel more at ease, you stop the overthinking, you stop the sad part, and you feel very much better and active. Specifically when you do a lot of exercises and these therapies, the cold therapies, they also work on your nervous system. Yes. Could you give us
copy of your presentation so that Yes, we will give that. So my question is, as you check into your center for 2-3 days and get all the treatment or holistic healing, what you are saying, so you check into it, or you just go, you stay for the whole day and go back to your house? What is that? Yes, for the moment we have an outpatient department. Of course, we dream big, and we hope very soon that we will be able to offer the same services as those big centers that cater 24/7 to their patients. So you come at whatever time is convenient for you, and we pamper you for 2-3 hours, and you go home, and next day, or you plan accordingly to your needs. Of course, we advise that you come regularly in order to maximize the effects. You will have more long-lasting effects if you're very regular in coming. If you don't space too much your appointments. But yeah, happy to discuss and happy to greet you and receive you at our center. Yeah, that's what I want. Is it okay just to come in to get a feel-good feeling? Even if you don't have any ailment? What's wrong in feeling good? Yeah, that's what I meant. So it's okay even just to do that? Yes, you can. For instance, can we book up Shirodhara set? Yes, but it has to be discussed with the doctor. Maybe Shirodhara is not for you. So, First the consultation. Yes, the consultation is very necessary to diagnose and analyze what your body needs. Maybe your body needs Shirodhara with oil or with charge. Yeah, because everything is specifically tailored to your needs and to your body composition and to the eventual toxin accumulation that you have. So in order to pinpoint even health seekers, people that are healthy, please consult with Dr. Anshika or Dr. Moria. They will find the secret to unlock your healing process. So yes, please do come. Ma'am, I just want to ask you on one aspect, like, most of the time, a lot of people go to the naturopathy after they fail in the allopathy. Okay? It has happened many a time. Okay. Now, when it goes there, do you have another expert, like allopathy doctors also here, or you have a cardio issue or a arthritis issue? There are specialists now. So, what is your interface between them? And are these all someone trying to certify? Okay, because what I found is a lot of difference in standards followed or process followed in different naturopathy centers. Okay, be in Kerala, or maybe Kerala is mostly from Kerala. You know what happens there. And I also attended one week, it's called Sukha Chikitsa, okay. It is not called like disease curing, it is Sukha Chikitsa. So you just go, have it. So just to tell about that, how do you have that interface of allopathy also, something like drop, there is a physiotherapist? Because in allopathy also, many a time, they do take care of a lot of aspects, okay, lot of aspects. Yes, if all of them together, be it Unani, be it Nadi, be it Ayurveda, there are a lot of specialists. In fact, as I consider, as a patient consider, all these are a doctor's process to cure, or that's one aspect. And I think someone said about in Kerala's thing and all. Yes, I think maybe this Kerala's thing has started long back, like the Kottakkal, Harivaitishala and all, hundreds of years back. So that lead advantage is there. But I believe nowadays, similar things are there in most of the states, and even I think they have done like the. Sorry, what was your question? No, my question was to the interface. I mean, in between your physiotherapy, the naturopathy, allopathy doctors are also here with you. Yes. Yeah, that's. So you have a very complete question. So as ma'am was saying at the beginning of our expose. We do have a Venu Geriatric Institute. So geriatric medicine is itself comprehensive across all, it's kind of a mini multi-specialist. So
We have Dr. Day, a former HOD at AIMS, so we will mutually refer our patients between that type of allopathy, which is very comprehensive, geriatric medicine, and naturopathy. The advantage of naturopathy, you mentioned Unani, Siddha, all the Ayush systems, is that since naturopathy is drugless, it is compatible with all other systems of medicine. Whereas, I mean, it's not to speak ill of other systems of medicine, but for example, Ayurvedic doctors sometimes ask you to suspend your allopathy treatments, same for homeopathy, etc. I mean, no judgment here. It has a rationale. And in naturopathy, we don't stop your medications. We work with them, and there will be a point, if you follow it everything, that you might not need them anymore. When you eat medicine, it lowers down your blood sugar. But already 100 or 70, and you eat them, you go into hypoglycemia. So why to eat them then? Automatically the allopathic doctor or the geriatric department will tell you, okay, stop these for a while now, you don't need them anymore. Or stop your regular insulin and just go with the Lantus, the long-acting insulin. It happens like that. Yes. I think in this, I just add you, what happened is, like, I went to, after I had an attack 4 years back, I was stent now. It was 2 days, it took 2 days for the doctors to judge it was a heart attack, and in between a lot of damages have happened and all that. But I am healthy. But I went to, I'll tell you specifically, JSS Medical College in Tamil Nadu, that is Coimbatore, with a hope that they can intervene and reduce my medicines. Now I went and told this to my cardiologist. He said, no, I won't be able to comment anything about you. But as far as I am concerned, it depends so on this the issue condition. is coming up. Yeah, it depends on your condition and your body's vital energy. Yeah. So mainly in old age, the vital energy is a bit low. If it's a young individual of 22 years that had a heart attack or a 30-year heart attack, it will happen very fast because the vital energy is very high. But in older patients who had already had so much of diseases, for example, thyroid also and diabetes also, and then he had a stroke, it will take a longer time. So it's going to south also, I would like to say the difference is they use a lot of Ayurveda there, too much of it with the naturopathy. That hinders because we work on the elements and they work on the doshas. So that is very difficult to to bring together sometimes. But here we work purely at naturopathy levels, taking little bit of Ayurvedic principles into consideration. So it makes a very good way to integrate that. Yes, so, sorry, Mr. Lal, No. Go ahead. No, if one was to come for treatment, make an appointment, then what happens here? One can always bring what my GP has told me, that prescription, but then are there additional tests, etc. required? If required. You would then be able to... Yes, if you have a report from like 1 year before, we will certainly tell you to do it again. Okay. Yes, but it's good to always bring your old reports to us so that we can assess better. Okay. Yes. Can you just follow a little bit aspects on the expense part of it, like the financial aspects? Because there is a say... Currently, if you want to know that part of it, you can visit our center post lunch and then we'll be able to explain you that. Thank you. Thank you. So couple of things. One is that when you're talking about the expense part, it's all very dependent on the package or the treatment they do. The other is that, let me tell you my own personal experience. I've been a hypertensive and on medication for over 30 years. Whenever I do have, whenever you're working, or even if you step out of your house, there is enough to give you, your blood pressure rises. So whenever I've had a sudden increase in my blood pressure, earlier I would go to the physician and he would add my dosage, which I think anyone who has blood pressure knows that happens, that they'll increase temporarily your dosage. All I do is go to the naturopathy center and I do exactly what she was saying. They immerse my feet in hot water, put a
cold towel, and if the blood pressure is slightly high, then take an ice cube and rub it on my spine, and within 20 minutes to half an hour, my blood pressure comes down. So one is that I do not increase medication. So naturopathy does help sometimes in our age group, when we've been on medication, we're chronic, it will taper it down. It may not withdraw. But this is very essential when we talk to the generation which is like our children who are in their 30s or 40s. For them, if they are also entering. At that time, we can ensure that they do not get into medication. So this definitely works very well, and we would be happy. I think when Tarun when she talked about car servicing, so he was talking about why not look at the, servicing, you have a AMC you take. So maybe we can actually look at offering AMC. And that will kind of, and then when you pay insurance, a premium, you make sure you also know it also. The other thing is that, yes, we do not currently have in-house facility, but we will, like they said, our dream is of course to have that. But on the other hand, it's very easy to go on a vacation for 1 week or 15 days in a different environment and become disciplined. You come back and you fall into your patterns. So here is a chance that you can come here in your normal environment, you go back, but you discipline yourself. The challenge with naturopathy is you need to make an effort. Like, Nakshiji was also saying that you need to discipline yourself. So very often it's easy for us to pop a pill. So, if your BP is going high, you take another dosage, but you don't want to spend that half an hour. Or to regulate it, you don't want to do it every day. That is the problem that we have. So, that is one of our challenge. And like you said, if you go to an allopathic doctor and you say that you want to try this, yes, there's not enough evidence-based studies. There are some, but there's not enough right now. It is a challenge. But that's exactly what is fueling us to walk that path. That we will, and the first thing is you educate the patient. You see, if you go and your doctor says, I don't trust it, there's no medicine, you're not interfering. So you can take a decision and come. And then your blood reports, when you take to your doctor, he'll be compelled to modify your medication. So that's why we are doing, our effort is two-pronged. One is that we want to educate our patients, and the other is we are also educating the fraternity. And so small steps we are taking, but it's your body, your life, you have to take a decision. So this is a small effort of this whole effort of ours on integrative medicine. And yes, we do have allopaths. Dr. Maria is an allopath. And we also, of course, have Dr. A.V. Day, who's a renowned, if you read legal surgeon, a very renowned, internationally acknowledged geriatric specialist. So we combine all these approaches, and that's what we are here, and we're happy to take you around if you have time today or any other day. So thank you very much, and I know we're talking diabetes, but this is a young generation. You can say thank you too. That's chocolate. We'll make an it's okay to cheat. That's a real cheat day. But do join us. That's something we want to do. That's okay.